शताब्दियों में कभी कोई युगदृष्टा बनकर आता है। हर शीश जहां नतमस्तक हो, व्यक्तित्व महान बन जाता है। सपनों की एक ऐसी ही पानगी है मोदी विश्वविद्यालय। एक ऐसा सपना जो भविष्य की नींव है, एक ऐसी नींव जो कि अगले 1000 सालों तक शिक्षा के अलग को रोशन करती रहेगी। We have had a great tradition of our own, 5,000 years. Now just see how the Upanishads compare the human mind. The Upanishads say that the human mind is comparable to a desert with millions of specks of dust. Something that you are right now sitting on this soil. And they say that every speck of dust, every grain of dust can blossom into a discipline by itself. There are so many millions of disciplines. The power within the human mind is such. It depends upon you individually to be able to awaken every speck of dust. Now look at the thinking Upanishads give about the human mind. But then at the end of the day, let us assume you have everything. You have the willpower, what we call sankalp. You have the capability by God's grace. But you must have an institution that permits you to nurture and to see that you are able to develop your latent power. रेगिस्तान के इन रेतीले कणों में उम्मीद की एक नई रोशनी आज मूर्त रूप धारण कर चुकी है और महिला शिक्षा के आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतुर है। आज से 3 दशक पहले एक उद्योगपति की आंखों में सपनों की चमक दिखी। गुजरते वक्त के साथ आंखों ने भी बुढ़ापे को दस्तक तो दे ही दी, लेकिन सपनों की ताजगी और कुछ बेहतर करने की ललक ने इस शख्स को शख्सियत बना दिया। एक ऐसी शख्सियत जिसके आभारी आज हजारों मुस्तकबिल हैं। To build a university and to sustain its quality for at least 1,000 years. Universities abroad like Harvard, Cambridge, MIT and many others that you can name off have reached their distinguished status in 700 to 800 years of existence in each of these cases. But what baffles me most is these institutions have not only survived, they have excelled, they have surpassed the founders' dreams and today continue to operate independently 700 to 800 years from the date they were installed. Now this is important for us to learn in India. Generations will come and go, and a minimum 1,000 years will see a number of generations. Can we take pride of the fact that what was created, what was intended, was truly nurtured and excellence brought into every discipline of life? Then the founders' dreams were true. The subsequent generations have done their job both for the nation and for the individual. ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मोदी विश्वविद्यालय के संस्थापक दिवंगत श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी जी हैं। 11 सितंबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह चुके श्री मोदी जी की आत्मा विश्वविद्यालय के कण कण में समाहित है और उनकी सोच की व्यापकता सुनहरे भविष्य का आलिंगन करने को तत्पर है। मोदी विश्वविद्यालय की संरचना मानो किसी चित्रकार की परिकल्पना हो जिसे बड़ी ही खूबसूरती से कैनवस पर उतारा गया हो। चित्रकार ने मानो अपनी सारी रचनात्मकता को उड़ेल कर रख दिया हो। ये खूबसूरती विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री मोदी जी के सपनों की प्रतिछाया है। शिक्षा से लेकर संस्कार तक का हर पहलू विश्वविद्यालय के कण कण में समाहित है। एक तरफ जहां आधुनिक शिक्षा के गुर से छात्राएं रूबरू होती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की विरासत की गौरव गाथा से भी अभिभूत होती हैं। एक तरफ जहां तपोवन हमें आध्यात्मिकता से जोड़े रखता है, वहीं दूसरी तरफ खेलकूद के मैदान नारी सशक्तिकरण का आह्वान करते हैं। वेद, उपनिषद और साहित्य से लेकर कंप्यूटर साइंस और न्यूक्लियर साइंस की शिक्षा की दक्षता छात्राएं यहाँ बड़ी ही सहजता से प्राप्त करती हैं। It reminds me almost a decade back when we had just put up 4 bamboo poles
a piece of cloth, and the contractor's bench when we were looking at drawings to what we have reached today. But we have a long way to go. तक्षशिला और नालंदा की विरासत और गौरवशाली इतिहास को फिर से मूर्त रूप देने की कवायद मोदी विश्वविद्यालय की नींव के साथ ही शुरू हो चुकी थी। 1989 में माघ शुक्ल पंचमी के दिन इस पावन पुनीत शिक्षा मंदिर की नींव रखी। स्थापना के एक दशक के अंदर सन 1998 में मोदी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई और इसके साथ ही शिक्षा का यह मंदिर प्रदेश की नई पहचान बन गया। 1998 में मोदी गर्ल्स कॉलेज ने राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त की, जबकि सन 2000 में मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता मिली। Our master plan is now being revised almost every year. And I'm glad to tell you, I know it will never be complete during my lifetime. Maybe it will take a good few decades, almost 100 years maybe. But the ultimate plan now includes 32 colleges in this campus. But I'm giving you the very modest minimum figures. We are planning at now 30,000 students. शिक्षा का ये सफर अनवरत जारी रहा और 2004 में मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। गुजरते वक्त के साथ मोदी विश्वविद्यालय ने प्रदेश में अपनी एक नई पहचान कायम की। 2013 में मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पर छात्राओं की पहली पसंद बन गई। On the research side, someday I hope this institute, many more years after I have perhaps gone, will be passing out hundreds of doctorates every year. This is the kind of planning we have in mind. 3 दशक के अपने सफर में मोदी विश्वविद्यालय की हजारों छात्राओं ने देश के साथ विदेशों में भी अपने हुनर का लोहा मनवाया और सफलता के परचम से शिखर को लगातार अभिभूत करते हुए नित नए कीर्तिमान रच रही है। But it is the job of people who promote to ensure that the institution outlives at least for 1,000 years. It is the job of the members of faculty to ensure that they hand over their reins to people who are capable. It is also the job of the students to see that they leave for posterity, because what you build today, this institution is largely dependent on your own inputs as well. So what you build today, you are leaving for posterity so that people could remember 500 years ago so-and-so student had passed out and she had held such a high post in the country. प्रांगण की धरा पर लहराते हजारों वृक्ष और उस पर कलरव करते पक्षी यहाँ की जीवंतता का प्रतीक है। आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्म और व्यवहारिकता का यह अनूठा संगम मानो पूरे भारत की विविधता को अपने आंचल में समेटे रखा हो। One is social sensitivity. That should now become a part of your life. You are lucky, you are educated here, I'm sure you will make a great success of your life. When you are successful in life, surely look after yourself, your family and everybody. But keep that social sensitivity in your mind. There are others who are also looking for a lot more. Can you help them in any little manner? Apart from social sensitivity, a subject that is now endangering the world in great measure, environmental awareness. These thousands of trees that have been grown here, and as the Vice Chancellor just told you, 81 different species of birds have come here as certified by the ornithologists from World Wildlife Fund. The first 2 years of our operation in this place, we didn't get the peacock for 2 years, which is found in every lane of Rajasthan in the village. 2 years it took us to even attract the peacock to the place. And today we have a great sense of satisfaction that 81 varieties have been identified. We are continuing further,
and we hope we haven't got a large number of water birds, and maybe in the next 5 years we will attract to be able to reach exceeding 125 varieties. Now that is, you have to realize this world, this planet Earth has been given to you today, which has got to be passed on to the next generation. So everything in relating to environment calls for your great attention, whether you have been the right recipient of this trust, if I might call you. You have been entrusted with this planet Earth. Give this Earth to the next generation as good as you found it. विश्वविद्यालय के 3 दशक के सफर ने सदी अपने नाम करने की ठान रखी है और ये युग पुरुष श्री मोदी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। I personally believe any educational institute should consider its moral obligation. I consider it a moral obligation that it is their job to train people, to educate people, and to try and best help the country in delivering back to the nation as many as people as they can do. Because at the end of the day, even if these people go abroad, I don't consider it a brain drain and all that. They are sending back money to the nation, they are an asset, they are further having exposure to various other people abroad. They will always remain a national asset. So it is the job of institutions to take up this task in a big way, and in no small measure are the promoters behind universities or the people, the faculty members in particular. It should be a job that they should now treat as a obligation, a duty to the nation. युग से शुरू हुआ ये सफर युगांतर तक अपनी अखंड विरासत को आगे बढ़ाते रहेगा।